Dear students, from today we will start poetry section. The first poem which we will start is A Photograph by Shirley Tolson. In this poem, the poet describes the three stages. The first stage, the photograph, which shows the poet's mother standing at the beach with her cousins and enjoying holiday. At that time, she was 12. The second stage was 20 to 30 years later, when she would laugh and feel happy after looking the photographs. And third stage is when the poet remembers her mother and she is no more. इस पोएम में पोएट ने 3 स्टेजेस के बारे में बताया है. पहली, जब वो अपनी माँ और अपनी कज़न्स के साथ में बीच पर खड़े देखती हैं, जब वो अपनी छुट्टी मनाने गई हुई थी. उस टाइम वो करीब 12 साल की थी. दूसरी स्टेज, जब वो 20-30 साल के बाद उन दिनों को देखकर खुश होती, जब उनकी माँ इतनी छोटी सी थी तो वो कैसी दिखती थी और कैसे उनके पहनावे थे, ऐसी दिखती थी. और आखिर में वो अपनी माँ को याद करती हुई जब वो इस दुनिया में नहीं है, काफ़ी परेशान होती हैं, काफ़ी दुखी भी होती हैं. उनको खुशी भी थी और दुख भी थी, लेकिन अफसोस इस चीज़ का था कि वो इस चीज़ को चुप रहने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकती थी. So this is all about this poem, and the message that we convey is whenever one tries to recall the old memories, one can have a look to the photograph. This is the last way of a remembrance of the past, which gives us happiness and remember those moments that we have spent with our family members. Thank you and have a nice day.